Yes, Vivek. Afterwards, you will leave the class. Yes, Vivek? Huh? Afterwards, you will leave the class. Gurutva Yatharth Yugant. Okay, Pragya, Tejaswini, Chinmay, Asmi. Good evening, everyone. What about others? Bhargav. Okay. In the previous class, we have just discussed about waves. है ना? Water lesson we started. So in that wave, we have already discussed about waves means in ocean circulation, three factors, that is waves, tides and ocean currents. So already we have finished waves. Now today we will discuss about that tides. So waves, in that what we have seen, that rise and fall continuously. Wave means that when the water on the surface of the ocean rise and fall, मीन्स जो वाटर है वो खुद सरफेस में वाटर ओशन में वो राइज एंड फॉल हो रहा है कंटिन्यूअसली. सो दैट इज ओनली नोन एज अ वेव्स. नाउ व्हाट इज द टाइड? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइड. और इसमें हम देखेंगे कि ओशन वाटर में जो है कि जो सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन होता है, टाइड का क्या रोल है ना इसमें. टाइड क्या रोल है? हमने वाटर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द वेव्स. नाउ सो वी विल सी अबाउट दैट टाइड्स. नाउ टाइड मींस वी नो दैट जो है टाइड्स, व्हाट इज टाइड्स? इफ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ टाइड्स, देन द rhythmic rise and fall. Okay, that means the definition, if we will see definition, then the rhythmic rise and fall, the rhythmic rise and fall of ocean water, okay, twice in a day. Ocean water level twice in a day is known as tides. Okay, is known as tide. Now, first we have to understand the definition. If you will understand the definition, so you will understand the full tide means what. See here, see the word rhythmic, rise and fall. Okay, ocean water level twice in a day. Now we will see the comparison between a waves and tides. अगर आप waves और tides में comparison करोगे तो आपको easily आप समझ पाओगे. Now first we will see the waves. In waves, what? When the ocean surface, or we can say when the water on the surface of the ocean rise and fall continuously. Okay, rise and fall what? Surface of ocean water. Surface of the ocean rise and fall alternatively. Rise and fall. When the water on the surface of the ocean rise and fall, means water up and down होता है. ठीक है, वो waves होता है. इसमें क्या बोल रहे हैं? The rhythmic rise and fall of ocean water level. Ocean में नहीं है ना, उसमें नहीं. Water, ocean water rise and fall होता है. ओशन वाटर लेवल जो है उसका, जो ओशन वाटर का जो लेवल है वो राइज एंड फॉल होता है. कितना? ट्वाइस इन अ डे. वो वाटर सरफेस में हो रहा है. ये क्या हो रहा है? ओशन वाटर लेवल जो है उसका लेवल जो है वो क्या हो रहा है? एक बार एकदम हाई टाइड्स में जा रहा है, फिर लो टाइड्स में. So two types of tides are there. That is, one is high tide, and the another one is low tide.
Another one is the low tide. Okay, so see the differences between one is the ocean water falls on the surface of the ocean twice. Here, rhythmic rise and fall, ocean water level rise and fall, two tides, है so that's why it is known as a tide. Tides are two tides, high tide and low tides. Now we will see when high tides is occur and how it occur, why. अब ये जो twice and day rise and fall हो रहा है तो उसमें भी तो बहुत सारे क्वेश्चन होता होगा ना कि पानी जब हाई हो रहा है तो लो टाइड जब हो रहा है तो पानी कहाँ जा रहा है, हाई टाइड क्यों हो रहा है, all these questions, so that one by one we will discuss. Okay, now how tides are formed. Now first we will see how tides are formed, that then only we will understand high tides and low tides. High tides means what and low tide means what. Now the storm, we know that gravitational pull. Now if we will throw this chalk, so it is coming back. Why? Because of gravitational pull. क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल उसको क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है. हाई टाइड और लो टाइड में जो है वो क्यों हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ही हाई टाइड और लो टाइड हो रहा है. So that means the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. Now how tides are caused if this question is there, so the answer will be what, the strong gravitational pull. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि why all this thing is there, because of gravitational pull के वजह से ये हो रहा है. So जैसे strong gravitational pull exerted by the sun and moon, both क्या हो रहा है, both sun and moon, means sun के पास भी gravitational, this is sun, earth, okay, and this moon, suppose this is moon. So moon is continuously rotating, revolving around the sun, you know very well, and earth is revolving around the sun. So moon is also having, sun is also having this. So due to the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface, so it causes what, tide. Okay, now during the full moon and new moon, just the full moon or new moon, जिस दिन moon होता नहीं है, just in other words in Hindi we are saying Purnima and Amavasya. So full moon and new moon days. So during full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in a, all these three are in the same line. जब तीनों जब वो एक सेम लाइन में आ जाते हैं, that means how sun, earth, moon. So all these are when in the same line, sun, earth and moon, all they are when in the same line. Okay, जब घूमते घूमते तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं. Okay, during when it happens, during the full moon and new moon days, the sun and the moon, because just now I told the earth is revolving around the sun, moon is revolving around the earth. So एक टाइम ऐसा आता है कि रिवॉल्व करते करते all these three are in one line. All these three are in a one line. Okay, same line. So at that time the gravitational pull जो होता है वो एकदम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सन मून सबके पास ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग, ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल वी कैन से. सो एट दैट टाइम विच टाइप ऑफ टाइड्स, हाई टाइड्स है. तो ऐसे टाइम में क्या होता है, हाई टाइड्स. So now this time what is there, high tides.
ओके, ऐसे टाइम में क्या होता है, हाई टाइड, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल होता है. When all these three are in one line, greater gravitational pull, and at that time, high tide. So this type of tides are also known as spring tide. Also, this is also known as spring tide. इसको क्या बोला जाता है? Spring tide. High tide is also known as spring tide. Okay, high tide is also known as spring tide. So when it happens, when during the full moon or new moon, all Earth, Sun and Moon are in one line. At that time, high tides are there due to high gravitational pull. Okay, and high tides are also known as spring tide. Okay, clear? Now the next tide. Now we will see the low tide. Now low tide, when the low tide occurs. Okay, low tide कब होता है? Now low tides when this is Earth, this one is Sun, this one is Moon, again this one is Moon. Because I told Earth is revolving around the Sun and Moon is revolving around the Earth. Okay, so revolve hote hote when it's reach first and third quarter. Okay, when the Moon is in its first and last quarter. जब वो फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में आ जाता है या थर्ड क्वार्टर में आ जाता है, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन डायगोनली. अब ये डायगोनली हो जा रहा है. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जो है, सपोज एक जन ने सर से पकड़ के रखा है, एक ने साइड से पकड़ के रखा है. ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ, मे बी मून उसको इधर से खींच रहा है, ऊपर से खींच रहा है, और जो है सन जो है वो साइड से खींच रहा है. तो जिसका ताकत जो है वो ज्यादा होगा, सपोज और सन का अगर होगा तो थोड़ा इस साइड में हो जाएगा. सपोज ऊपर में अगर मून ने उसको खींचा तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, है ना. दोनों उसमें डिवाइड, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. जैसे हमने हाई टाइड के टाइम में हमने क्या देखा था, तीनों एक लाइन में था, तो एक जगह में ही हो रहा, तो वो हाई टाइड हो रहा है. बट इसमें डिवाइड हो रहा है. इस केस में क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है. ये भी खींच रहा, सन भी खींच रहा, ऊपर से मून भी खींच रहा. थर्ड क्वार्टर में जब वो इधर लास्ट उसमें आ रहा है, इधर भी उसका हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बढ़ गया. ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ना वो किसी के पास वो उस पूरी तरह वो वाटर जो है नहीं ले पा रहा. तो ऐसे टाइम में क्या होता है, लो टाइड. ऐसे टाइम में क्या हो जाए, ये पोजीशन रहेगा सन, मून और अर्थ का, तो ऐसे टाइम में वो लो टाइड होता है. सो व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर्स get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon. Opposite direction में हो रहा है, ये upward direction में, this is another direction. Both that is in different direction, opposite direction. Okay. So gravitational pull of sun and moon resulting in a low tide. Because both it is in opposite direction, so that's why the tides are in a low tide. At that time, what is there? Low tide. Okay. And this low tide are also known as neap tide. Okay. High tide is known as spring tide, and low tide is also known as neap tide. Okay. Clear? So this is all about that tide. Now, next is the advantage of tides. Now we have discussed about the definition of tides. Then how does tide occur? Tides जो है वो कैसे occur होता है? How tides are formed? We can say how tides are formed. Then two types of tide, that is the high tide and low tides. Now the advantage of tides. Now we will see advantage of tides. Okay. What are the advantage of tides?
Now, advantages of टाइप्स। टाइप्स से क्या क्या एडवांटेजेस होता है? ओके, हमने देख लिया है लो टाइड, हाई टाइड, ओके, ऑल दिस थिंग। नाउ वी विल सी अबाउट दैट एडवांटेजेस ऑफ टाइप्स। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ टाइप्स इफ वी विल सी, देन high tides help in force, that is high tide help in navigation. High tides help in high tides help in high tide helps in navigation. Now you know very well navigation means what? High tides help in navigation. Navigation means, you know very well, navigation means what? Now किस तरह से हाई टाइड जो है वो नेविगेशन में जो है वो हेल्प करता है? वो किस तरह से हेल्प करते हैं? एक्चुअली क्या होता है जब हाई टाइड आते हैं, जब बहुत ज्यादा हाई टाइड्स होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे जो वहां पर ब्रिज टाइप के हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं डैम है ना, डैम में वाटर स्टोर करके रखते हैं, ओके, वाटर स्टोर करें। उसी तरह से जो शिप वगैरह जहां पर ज्यादा वो होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रिज टाइप के बना देते हैं। तो जब बहुत ज्यादा हाई टाइड्स या पानी वो होता है तो वो क्या करते हैं, स्टोर करके वो रखते हैं। जब उनको उसको वो करना रहता है नेविगेशन के टाइम, वो क्या करते हैं, पूरे गेट्स को फिर वो पहले वाटर को स्टोर करके रखता है। जैसे ही वो बहुत प्रेशर आता है तो वो गेट को खोल देते हैं, सारे जितने भी शिप्स है ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, फ्लो करके चले। तो इसलिए हाई टाइड्स जो है हेल्प्स इन नेविगेशन बोला जाता है। Now another thing is high tides help in fishing. This, yes, correct. High tides helps in fishing. Okay, high tide helps in fishing. Now high tide help in fishing. Why? You know very well. अभी जैसे हम लोग डेफिनेशन वी हैव सीन ना कि जो वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल होता है। तो जब वाटर लेवल बहुत ज्यादा टाइड्स आते हैं तो वो क्या करे, अपने साथ बहुत सारे फिश जो है वो एकदम साइड में बैंक में और शोर पे जो हम लोग होते हैं, सी शोर जो होते हैं, वहां पर पूरे फिश को वो लेके आए। जितने भी फिशरमैन जो है वो होते हैं उस टाइम पे, वो इस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो मोस्टली जो है अपने नेट्स जो होते हैं, फिशिंग नेट्स वो स्प्रेड करा के रख देते हैं। तो जब वो हाई टाइड्स आते हैं पूरे फिश जो है उनके नेट्स में ऑलरेडी वो आ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हाई टाइड हेल्प्स इन फिशिंग। नाउ यू नो वेरी वेल, जब कभी भी कुछ साइक्लोन या कुछ भी स्टॉर्म्स वगैरह आता है तो ऑलरेडी जो है मेट्रोलॉजिकल जो वो होते हैं उनका है ना, वो हो जाता है, डिक्लेयर कर देते हैं कि हाई अलर्ट कर देते हैं कि फिशरमैन जो है वो वहां पर साइड पे उस एरिया पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? दिस इज द रीजन, क्योंकि फिशरमैन मोस्टली जो है वो फिश कैच करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जब हाई स्पीड में जब वो रहने का चांसेस होता है तो वो पहले से ही जो है वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वहां पर फिशरमैन कोई ना जाए, क्योंकि अदरवाइज वो उन पे क्या होगा, अटैक, मतलब वो डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। So this is the second advantage, high tide helps in fishing. Now third we will see high tides help in fishing. The third one is tides are helpful in generating electricity. Tides are helpful in generating electricity. Now generating electricity how? The टरबाइन जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई टाइड्स को आने, तो उस टाइम से भी जब वो टरबाइंस में जब जाके वो वाटर उस पे टच होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सिमिलरली लो टाइड्स में जब वापस वो आ रहा है उस टाइम पे अगेन टरबाइन में वो टच होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। So this is also another advantage, that tides are helpful in generating electricity, both high tides and low tides.
Okay. Now the last advantage, that is, okay, tidal power. This is on the three advantages are there. That is high tides helping navigation, and this tides helps in generating electricity. These are the three advantages there. High tide helps in navigation, then high tide helps in fishing, and tides help in generating electricity. Okay, so this is all about the tides, waves over. These are the two factors we have already discussed. One is waves, second one is tides. Okay, now last only left, that is ocean current. Okay, now tomorrow we will discuss about that ocean current. Okay, so thank you all of you.